Now we are going to study the second part of your chapter, that is physical features of India, the northern plain. The northern plain of India is formed by three river systems, that is Indus River, the Ganga River and the Brahmaputra, along with their tributaries. This plain is composed of alluvial soil which has been deposited over millions of years ago. The total area of the northern plain is about 7 lakh square kilometers. It is about 2,400 kilometers long and about 240 to 320 kilometers broad. And this northern plain is divided into three parts, that is known as Punjab Plains, Ganga Plains and Brahmaputra Plain. Punjab Plains lies in the western part of India, Ganga Plains lies in the central part of India, and the Brahmaputra Plains lies in the eastern part of India. This northern plain is therefore divided into three sections. Punjab Plains. This lies in the western part of northern plain. It is formed by Indus and its tributaries, that is 5 tributaries: Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj. The major portion of this plain lies in Pakistan, and there are many doabs. Doab means a piece of land lies between two rivers. The literal meaning of doab is do means two और आब means water. तो दो वाटर बॉडीज के बीच का जो लैंड होता है दैट इज नोन एज दोआब. एंड पंजाब का अगर लिटरल मीनिंग देते हैं तो पंच मीन्स 5 एंड आब मीन्स वाटर. तो 5 वाटर बॉडीज हैं: झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज. इन वाटर बॉडीज के बीच में जो आब बनता है, जो लैंड है, दैट इज नोन एज पंच आब. क्लियर? Ganga Plains. This plain extends between Ghaggar and Tista rivers. This lies in the states, that is Haryana, Delhi, UP, Bihar, some part of Jharkhand, West Bengal, and it is known as Ganga Plains. It is very fertile area and very populated area also. Brahmaputra Plains, it lies in the eastern part of India, or the eastern part of the northern plain, and it lies in Assam. On the basis of the relief features, this northern plain is further divided into 4 regions, that is Bhabar, Tarai, Bangar and Khadar. These are very important terms और इन्हें आपको अपनी क्लास की एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना चाहिए, याद करना चाहिए. भाबर, जब रिवर्स माउंटेन से नीचे आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे पत्थर ले आती हैं, एंड दिस मेक अ विथ ऑफ दिस बेल्ट. जो पत्थरों का जो बेल्ट बनता है अबाउट 8 to 16 किलोमीटर्स, एंड इट लाइज पैरेलल टू द शिवालिक्स. दिस रीजन इज नोन एज भाबर एंड ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस रीजन. तराई रीजन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये दलदल भरा होता है, मैशी होता है, स्वैम्पी होता है, एंड इन दिस रीजन स्ट्रीम्स रीअपियर. Bangar is the largest part of the northern plain and it is composed of the oldest alluvial soil. It lie about above the flat plains and they resemble terraces. The soil of this region is locally known as kankar and is composed of calcareous deposits. यानी कैल्शियम काफ़ी होता है, कंकड़ होते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉयल है, टेरेसेस होते हैं, फ्लड प्लेन्स के ऊपर लाई करता है, और ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन है. अब खादर आइए. खादर इज यंग, मेड ऑफ और फॉर्म्ड ऑफ यंगर एलुवियल सॉयल, दैट इज वाई इट इज नोन एज खादर. दिस सॉयल in this region is renewed every year and thus highly fertile. यानी खादर बांगर से better fertile होता है, highly fertile होता है. It is renewed every year, it is younger and better alluvial, fertile हो गया. और बांगर जो होता है older alluvial soil है. खादर एंड बांगर को काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको ज़रूर आप लोग तैयार करेंगे. द नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया हमने कंप्लीट कर लिया. अब आइए पेनिनसुलर प्लेटू. प्लेटू आप जानते हैं पठारी इलाका, इसको प्लेटूज. एंड पेनिनसुलर का मतलब क्या हो गया? अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड
बाय वाटर थ्री साइड्स, यानी भूमि का वह भाग जो कि तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है और सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पेनिनसुलर प्लेटो. Peninsular Plateau is divided into Central Highlands, Deccan Plateau and Chota Nagpur. One is indicated as Central Highlands. देखिए सेंटर में है, that is why it is known as Central Highlands. Number 2, Deccan में है, दक्षिण में पड़ता है, that is known as Deccan Plateau. And third जो है छोटा नागपुर, नाम भी छोटा है, छोटा means small. Peninsular Plateau is also known as tableland. What is the meaning of tableland? Actually, tableland is another name of plateau. It is composed of oldest rocks because it was formed from drifted part of Gondwana. जब गोंडवाना लैंड के जो 5 पार्ट्स लैंड मासेस थे, ग्रेजुअली जो वो ड्रिफ्ट हुए, उसकी वजह से ये पेनिनसुलर प्लेटू बना. ब्रॉड एंड शैलो वैलीज हैं. इट इज़ राउंडेड बाय हिल्स और ये इसकी करेक्टरिस्टिक है. Plateau can be divided into two regions, that is Central Highlands and Deccan Plateau. The Central Highland lies to the north of the Narmada River. ये आपको ज़रूर याद करने की चीज़ है. नर्मदा रिवर के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड्स हैं एंड इट कवर्स मेजर पोर्शन ऑफ द मालवा प्लेटू. इसमें मालवा प्लेटू पड़ता है. दिस रीजन फ्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट विच इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ दिस रीजन. इट इज़ वाइडर इन द वेस्ट. वेस्ट में काफ़ी चौड़ा है और ईस्ट तक आते आते नैरो हो जाता है. इस एरिया में बुंदेलखंड है, बघेलखंड है एंड mark the eastward extension of this plateau. The plateau further extends eastward into the Chota Nagpur Plateau. तो खास बात ध्यान रखिए कि मालवा प्लेटू है, ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है और नर्मदा रिवर के साउथ में क्या है, डेक्कन प्लेटू. इट इज ट्रायंगुलर इन शेप. सतपुड़ा रेंज मेक्स इन इट्स नॉर्दर्न पार्ट. महादेव, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज जो है इसके ईस्टर्न पार्ट में, इन्हें याद कर लीजिए. महादेव, कैमूर एंड मैकाल रेंजेस लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू. The slope of the Deccan Plateau is from west to east and it extends into the northeast, which encompasses Meghalaya, Karbi Analog Plateau, North Chachar Hills and Kargo Khasi and Jaintia Hills. These are the prominent parts. The western and the eastern घाट, इसका भी कंपैरिजन बहुत आता है. मैंने पहली वाली स्लाइड्स में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स को काफ़ी डिस्क्राइब भी किया हुआ है. अब वहाँ से भी आप अपने पॉइंट्स बना सकते हैं. सो लेट अस सी. द वेस्टर्न घाट मेक्स the average elevation of the western ghat is 900 to 1600 meters. It compared to 600 meter in case of eastern ghat. यानी 600 की हाइट है ईस्टर्न घाट की और जो वेस्टर्न घाट का एलिवेशन है वो 900 से लेकर 1600 मीटर्स तक. ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेस फ्रॉम महानदी वैली to the Nilgiri in the south and the western ghat causes oceanographic rains as they face the rain-laden winds from the west. Now the Indian desert. Now the greatest Indian desert is known as Thar Desert. The Great Indian Desert is also known as Thar Desert. It is a large and arid region, यानी शुष्क भाग है, in the northwestern part of India. ये देखिए Thar Desert. It is the Thar Desert. It is an area about 2 lakh square kilometer. It is the world's 9th largest subtropical desert. The Indian desert lies towards the western margins of Aravalli Hills. This region gets scanty rainfall, which is less than 150 millimeter in a year. Hence, the climate is arid, vegetation is scanty, मतलब बहुत कम है, and the Luni is the only large river, but some streams appear during rainy season. Crescent shaped dunes and branches abound in this area. लूनी इसका सबसे बड़ा रिवर है. इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है और यहीं पर हम इसे रोकते हैं.
तो इस तरीके से हमने